Hello and welcome. Now I'm coming to you live from the streets of the national capital. This place is known to many as Bhogal in Jangpura, here in the heart of between South Delhi and Central Delhi region. But this place, if you can look at it, is like mini Kabul. This is a place where so many Afghans who've come over the years have been staying. There are Afghan bakeries, Afghan travel and tour. There are people who stay here, they work here, they run medicine shops over here, fruit sellers, all of them. This is, by the way, the Afghan melon. And it's not just commerce that is impacted by this. This is also the place where we've actually seen now become home to so many people who have traveled in the past couple of days. By some miracle, those who did manage to travel back and come here to the country, come here in India. Now, we are joined today on the program by some people who've been here for the past 3-4 years, others who've just been here a few days. The challenges that lie ahead, even for those who were lucky enough to move out of the country. What are those, and what exactly is currently the situation on the ground? We'll be talking about all that today, and my name is Sonal Mehrotra Kapoor. Let me start with somebody who's actually come here just 3 days ago. And he doesn't understand English or Hindi very well, so I'm going to be using a translator over here. Tell me your name, please, and tell me, you came here 3 days ago. How did it happen? How did you manage your visa? And how did that flight actually take place? نام نصیب است دیگه تقریبا مدت 3 روز یا 4 روز میشه که به کشور هندوستان آمدیم و اینجا که آمدم خیلی با مشکل ما ویزا گرفتم چون ویزا نمیدادم ویزا بند بود سفارت بند بود و خیلی با مشکل ویزا میداد. इनका नाम हसीब है। 3 दिन से पहले ही अफगानिस्तान से आ चुके हैं। वहाँ पे वीज़ा में बहुत दिक्कत होती है, वीज़ा लेने में बहुत प्रॉब्लम से यहाँ पे आए। फिलहाल भी जो यहाँ पे इनकी हाफ फैमिली अफगानिस्तान में रह चुकी है। अभी भी वहीं पर है? वहीं पे है ये जो जैसे ये बोले आपकी बात हो पाई है उनसे? امرای فامیلم گپ میزنم یگان وقت که تلفن رخ میکنم امرایشان گپ میزنم جایشان جانشان در خطر است اما نمیشه گفت که خوب هستن اما اعلی حضرت افغانستان طالب است امکان خطر است. फिलहाल उनसे बात हो रही है लेकिन उनसे ठीक से नहीं क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क भी थोड़ा इशू है, नेटवर्क प्रॉब्लम वहाँ पे आ रहे हैं तो अभी भी उनको लाइफ को थ्रेट है वहाँ पे तो बात हो रही है लेकिन उनकी उतनी ज़्यादा नहीं क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क उतने इस दिनों से ठीक से नहीं आ रहा बोल रहे हैं। ठीक नहीं आ रहा है। आपने बोला लाइफ में थ्रेट है, उनका लाइफ को उधर थ्रेट है, प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत थ्रेट्स आ रहे हैं। मैंने बाकी लोगों को भी देखा, थ्रेट लेटर्स भी आए हैं। किस तरह का चल रहा है उस समय अभी काबुल की सड़कों पे क्या नज़ारा है? फिलहाल में कहता है वजह काबुल मैक्सिमम चिगा पास काबुल सारा कोई काबुल दा कुछ पास कुछ काबुल चिगा पकड़ दर चिगा در سرکو کوچای کابل همش طالب است جنگ است وحشت است و امروزه مردم ما را میکشن از بین میبرن چیزی است که اما مردم هم دنیا میفهمه که اونجا طالب آمده و فعلا طالب حکومت میکنن. फिलहाल जैसे बोल रहे कि अफगानिस्तान में बिल्कुल वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, सारे तालिबान हैं। अभी वहाँ पे लोग सड़क पे वो ठीक से घूम नहीं पा रहे तो तालिबान है हर जगह तो ठीक से ना घूम पा रहे ना काम दाम ना कर रहे हैं। तो सारा जो पुलिस वगैरह कर्फ्यू जैसा लग गया है वहाँ पर, लग गया है, सब अपने अपने घरों में खौफ के साथ बैठे हुए हैं। जो निकल पा रहे हैं वो निकल पा रहे हैं, बाकी नहीं हो पा रहा है। बाकी अपने घर में बैठे हैं। आपने I'll come back to you. I just have other and women such a central focus of everything that is unfolding in Afghanistan right now, and I've got some of them with me over here. Some of them who traveled quite recently and others who've been here in the country for a while now. Please tell me your name. मेरा नाम फरीबा हकीमी है और मैं 4 साल हो गया है हिंदुस्तान में आ गई 2 लड़कियों के साथ और मेरा प्रॉब्लम ये था कि मेरे हस्बैंड तालिबान के साथ है, उसके हाथ एक साथ उसका सपोर्टर तालिबान था और मेरे एक लड़की 10 साल उम्र में उसने बेच दिया तालिबान को। मैंने और मुझे बार बार धमकी दी थी कि तुम्हारे 2 बेटी और भी हम ले चलती। तालिबान बोलती थी, मुझे 4-5 धमकी मिल गया है तालिबान की तरफ से। लेटर है वो वाला, मुझे दिखाएंगे। गया हो अफगानिस्तान से सिर्फ बच्चों के लिए यहाँ गया इस उम्मीद पे की या साज़मान मिलल मुत्तहिद हमारा हेल्प करती है। यहाँ 2 साल हो गया कोरोना की वजह से कोई अफगानी की हालत ठीक नहीं है, यहाँ काम वाम नहीं है। जो किसी के घर उसका लड़का भी है मर्द भी है जो पास के उसका काम सही नहीं चलती है। हम बहुत मजबूर है, हमारा हालत बहुत खराब है। आप जो कहने का कोशिश कर रहे हैं कि पहले तो जो फंसे हुए हैं वहाँ पर उनको बहुत प्रॉब्लम है, जो निकल के आ रहे हैं उनके लिए भी लाइफ बहुत आसान नहीं है, यहाँ आके बहुत दिक्कत है। उन लोगों का भी प्रॉब्लम ज्यादा है, हम लोगों का भी प्रॉब्लम अभी ज्यादा हो गया है। मैं अभी 4 साल हो गया हिंदुस्तान में हूँ, 4 साल में मुझे पीछे लेकर तालिबान बेचते मेरे फैमिली को, मेरे बाबा को। 4 साल हो गया कि मेरे मौत को क्या लिखा है इस पे? इसमें कोई
इसमें पढ़ लिया है कि तालिबान ने लिख दिया है कि मैंने 2 बच्चों के साथ आ गया हूँ हिंदुस्तान में, इसलिए इसकी मौत होती है, आखिरी सज़ा मेरा मौत है। और वो 4 साल हो गया कि इस पेपर में मैंने इसको यूनिसियार में भेज दिया कि मेरे अफगानिस्तान से मेरे बाबा ने ये पेपर भेज दिया है और इस तालिबान की तरफ से आ गया है, हमारी हालत ख़राब है। तो आपका फैमिली अभी भी वहीं पर है? मेरी फैमिली सब इराक में, और उन लोगों के जान बहुत खतरे में है। हम नहीं समझते कि अभी मेरी हालत यहाँ क्या होती है। जो तालिबान सब अफगानिस्तान को पकड़ लिया, हम नहीं समझते कि उसके पीछे किसके हाथ है। हम अभी हिंदुस्तान में भी आराम नहीं रह सकते, 2 बच्चों के साथ हम यहाँ क्या करें, हम बहुत मुश्किल में है। जो जगह जो मुल्क हमारे हेल्प कर सकती है तो प्लीज अफगानियों को सब देख लीजिए, हम बहुत परेशानी की हालत में है। I think this is just one of the many voices which tell you what? That tell you, A, there is a humanitarian crisis unfolding in Afghanistan. We've seen all day those terrible, terrible visuals of people just latching on to whatever they could as part of that aircraft when it was taking away. It's happening after flight, and now there is no more flight operating altogether. So even if some help can go there, how will that happen? India, of course, is prioritizing their own people first. Their embassy people who are still there, 200 plus in Kabul as we speak, and an entire plan is being talked out to evacuate them, and we don't know what will happen to the civilians after that. But just to give you a sense of what life of a refugee really is and what happens to these people who are even trying to escape out of there, just tell me your name and to our viewers as well. And you were telling me a little while ago, you've been here, what, 3-4 years now? 4 years. Yes, hello, my name is Nargis Bakiri and I'm 21 years old. Since 2018 we are staying here. And, so Nargis is 21, 2018 is when she came here in the country. And I, before we started shooting this program, I was asking her, do you feel lucky today? Do you feel lucky that you're one of those people who managed to escape? You're not living in that country anymore. And the answer she gave me really shook me up. Nargis, I just asked you, right? Like, do you feel lucky that you, your mother are here today and you're not trapped in Afghanistan at this point? I don't know who are lucky and who are unlucky. Most of our family are still in Afghanistan. They're stuck in a very stressful situation. And the main point is this: we also lost our hopes, and they also lost their hopes. And there is no good point of view for surviving in Afghanistan. Even we are here. When you say hope, you mean you had hope that once things settle down in Afghanistan, you'll be able to go back. And now the turn of events tell you that time might not happen. That time just might not come. I don't know. Now the President Ashraf Ghani also escaped away. And there is also no president. So here we have lots of problems for surviving. And in this situation, I couldn't say who are lucky and who are unlucky. I also have with me some other people over here whom I've been speaking with to just get a sense of what's happening. I was speaking to all of you a little while ago to try and understand that all of you have made sort of a livelihood over here, right? अपना बचाने का कोशिश करें, यहाँ पर बात करने का लोगों से कोशिश करें, रोजी रोटी कमाने का कोशिश करें, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा, कितने दिनों तक ऐसे ही चलेगा, और अभी जैसे घर वापस जाने का क्या वो अब ख्वाब चला गया है? यस, काफ़ी लोग हैं जो इन्होंने इधर पे तो 3-4-5 साल से रह रहे हैं। जैसे मैं अब पढ़ाई कर रहा था, मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इधर मास्टर्स कर रहा हूँ अपना, और अभी मेरा वीज़ा भी बाकी है। फिर बात क्या है कि जैसे हालात जो अफ़गानिस्तान में हो रहा है आजकल, ये अनसर्टेनिटी में है, सब कुछ अनक्लियरिटी है, और किसी को भी कोई भी पता नहीं है, like no one knows what's gonna happen tomorrow. That's why I can't risk everything. Like I've studied, I've invested my time and my money and my energy here for my studies, but I can't just go back and start everything from zero and from zero again. That's why most of us here, we don't only just wear intention about our families. We all are worrying about our future. Because here, especially now, the airport there, the system is jammed, and there is no any specific system for the flights to come and go. Have you? Do you have your family still over here, or everybody is here? No. I'm just alone here. All my family, they are living there.
My family, like most of the ladies in our family, they have governmental and organizational jobs. So like the Taliban have announced, like no one should go out from their homes. So everyone is living in the home, and I just talked to them today. Like the good thing is for now that they have internet and connection, so we can talk to them, but that's barely working. The connection is not good enough. So I talked to them like outside our house where we live. It was a very rush road. But now it just looks like a zombie land. No one's there, only the military tanks with the Taliban and insurgents in it. So people are really, like now there's no fighting, but there is a dar hai, wahshat hai, like people are afraid. Taliban came out and said that they'll be changing their ways this time around. They will be more accommodating, etc. But nobody trusts them. Yeah, but the thing is, like from they have in Qatar when the peace negotiations were ongoing, they promised a lot of things. Like they promised with U.S. government that. Do you believe them? No. Like that's I'm trying to say. Like they have proven everything wrong. Like it doesn't really matter what they have promised in the past 20 years and now in Doha and Qatar. They are not fulfilling any of that promises. They were promising that we will reduce the casualties and the fightings, but unfortunately it got doubled and tripled, and now we can see the result. All right, so streets of Kabul, which used to be flooded with people, flooded with activity, commerce, trade and aspirations maybe of people, now completely deserted. Yes. It seems like a zombie land, as this young man just, sort of described it to us. His family is still stuck there. He still wonders what's going to happen and what's going to be the future for his sister, for his mother as well. We're going to slip into a very short break at this point. When we come back, we'll speak with more people who've been here for a while, who are now trying to see what is the best way forward to bring family here. But even for those who've been here for the past 4-5 years, they're saying with the Taliban now taking over Afghanistan, what is home now? And which country will be their new home now? That's the question. Welcome back. You're looking at the special presentation that we bring to you from what can one easily call are the Afghan colonies of the national capital. People have been here for 4 days, 4 months, 4 years as well. And the stories, they don't just end, and the horror just doesn't end by people escaping out of Afghanistan at this point, but what they actually have to face when they cut here and they get here as well. Hidayat is with me. Hidayat is a young guy who came here about 4 years ago. And Hidayat knows Hindi better than he knows English, and he told me that's because he watches a lot of Bollywood movies over there. तो काफी लोगों को वहाँ पर हिंदी आता है क्योंकि बॉलीवुड मूवीज बहुत देखते हैं. वहाँ पे देखते हैं. स्टार्टिंग में हम भी थे वहाँ पे. बॉलीवुड का थोड़ा क्रेज था वहाँ पे. जैसे यूजुअली जो भी नई फिल्म आती देखते थे वहाँ पे. तो आपका जो वहाँ पर सिटी है, सबसे पहले तालिबान ने 4 साल पहले वहाँ पर टेक ओवर करा था, तब आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आए. मैं उसी टाइम वहीं पे था जब पहली बार तालिबान हमारी सिटी में कुंदूज से बिलोंग करता हूँ. हमारी सिटी बॉर्डर है ताजिकिस्तान के साथ. हम वहीं पे थे जब पहली बार तालिबान आए. जो हमको भी जब लाइफ थ्रेट मिले, हमें भी डर लगा. सारे तो एक डर सा होता है बंदे में. तो जैसे क्या करे, कहाँ जाए. तो फिर हमें भी मजबूरी से हालात छोड़ने पड़े, यहाँ पे आने. तो 4 साल से यहाँ पे रह रहे हैं अभी फ़िलहाल. तो जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है, हमारे भी यहाँ भी बहुत प्रॉब्लम है. ये नहीं है कि सिर्फ वहाँ पे प्रॉब्लम है, हमारे तो बिल्कुल अब होप भी टूट गया. कि जितने भी अफगानी यहाँ पे है, सारे ना घर के रहे, ना बाहर के, ना अपने, ना वहाँ के हुए, ना यहाँ के. ये प्रॉब्लम है हमारी. हमें जैसे हमारा कोई फ्यूचर नहीं है. हमें पता नहीं हम कहाँ क्या होगा हमारा. जितनी भी जब यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे ऐसी भी लेडीज़ है, उसके 2 बच्चे, खुद एक लेडीज़ है, 3 बच्चे, एक लेडीज़ के 4 बच्चे, 5 उसका हस्बैंड नहीं है. तो यहाँ पे क्या करेंगे वो लोग. हमारा एक ही होप था कि जब हम अफगानिस्तान वापस जा पाए. वहाँ पे भी सिचुएशन ठीक नहीं है यार. बहुत दुख होता है. एज अ थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर, आई एम फिनिश्ड. एवरीवन इज फिनिश्ड हियर. Everyone who is living in Delhi, everyone who is staying in Afghanistan, the people who are called Afghani is finished. What should we do? Where should we complain? Where should we? For who we told us that we have a problem, solve our problem. यहाँ पे लोगों के लिए खाना नहीं है. अफगानी यहाँ पे आते हैं, 1 महीना ज़्यादा गुजारा हो जाता है. 1 महीने बाद देखो यहाँ पे उनकी तुम एज देखोगे, छोटे लड़के काम करना चाहते हैं. क्यों? मजबूरी है सबकी. कोई भी शौक से नहीं आया. अब जितने भी यहाँ पे एप्लीकेशंस रेफ्यूजीज के लिए यूएन के पास पड़ी हुई हैं, उस पे कोई नहीं पढ़ता. मैं बोल रहा हूँ ना आपको, यहाँ पे ऐसी फैमिली भी अफगानी के 12-13 साल से रह रहे हैं मैडम. यहाँ पे 12-13 साल बहुत है.
बहुत है, 1 साल बहुत है इंसान तो की जब जिंदगी आते में। हैं यहाँ पर लोग इस होप से आते हैं कि वापस जाएंगे, और अभी जो हुआ है उससे वो होप चला गया है। जैसे मैं यहाँ हूँ, मुझे मेरी यही सोचता है कि एक दिन मेरा सिटी ठीक होगा, मैं वापस चले जाऊँगा, या कम से कम जैसे यहाँ पे जितने भी अफगानी है ये सोचे चल वहाँ के नहीं हुए, कम से कम हम बाहर के शहर के जैसे जर्मनी ने बोला है, कनाडा ने बोला है कि हम 20,000 लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। किसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? यहाँ पे देखो सारे फकीर, यहाँ पे सारे गरीब, यहाँ पे इनका देखो, जो वहाँ पे फंसे हुए उनका निकालो कुछ। और मैंने ये देखा, मैंने जितने लोगों से आज यहाँ पर बात करी, सब करीब 4-5 साल से ही हैं यहाँ पर। सो 4-5 साल पहले जब ऑस्ट्रेलिया ने विड्रॉ करना शुरू कर दिया था, सबको हिंट हो गया था कि इट्स गोइंग टू बी अबैंडन्ड, सो पीपल स्टार्टेड लीविंग बैक देन। यस 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 उसी से, जब मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जब अफगानिस्तान में तालिबान है, जिससे पूरी सिटी तालिबान सरेंडर था, तो हमारा कोई रास्ता था नहीं, तो हमने चलो सोचा कि यहाँ पे इंडिया में आ जाएंगे, यहाँ पे UN ऑफिस से हमारा काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो और भी बदतर हो गए। अगर यहाँ पे आ गए, अभी प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, जैसे अफगानी हम यहाँ पे रह रहे हैं, अगर हमारा UN में केस नहीं चला, केस अगर रिजेक्ट हो गया, हमें वापस अफगानिस्तान जाना होगा, तो अफगानिस्तान में हम करेंगे क्या? अफगानिस्तान की सिचुएशन ही ऐसी है, क्या करेंगे हम वहाँ पे? Taliban do with people who return? Yes. You know. I know. I just want to talk and bring in another aspect over here. I have with me another young lady who has come back some time ago. Tell me your name first and tell me how long. You've been here for about 3-4 years now, yeah? But your family is still stuck there. Did you speak to them? Yeah. You spoke to them? What did they tell you? What did they describe about what's happening in Afghanistan right now? अभी वो लोगों बोले अभी सिचुएशन बहुत ख़राब है। जो मैं 1 घंटे पहले मज़ार शरीफ में कॉल आया मेरे, मैं बात किया, बोल रहे तो लोगों मतलब डेड बॉडी है, रोड में पड़ा है, मतलब कोई घर से बाहर जा नहीं सकता है, वो डेड बॉडी को मतलब लेके मतलब लोगों डेड बॉडी, जो लोगों फाइटिंग के अंदर में मर गया, वो डेड बॉडी अभी रोड में पड़ा है और कोई क्लियर करने के लिए भी नहीं है। बट मुझे ये बताइए, एज अ वुमन, you are in India right now, things are tough, but perhaps back there things are just unbelievable. You don't know what the future of women is going to be in that country. Yeah. In the future, I'm not thinking about. I can't thinking about in the future because right now we say situation so bad, and before we have so many experience from Taliban. They always killing the women. They are. Is that the reason why you left? Yeah, because my reason is so many problem, a lot of problem. Which one I will should tell? I know. Good luck with what's happening, and we can really hope and pray at this point and hope the governments will intervene at this point. As we wrap up the program today, I just want to bring in a bit of attention to what's happening to commerce in this area as well. So a lot of these young Afghanis do trade. They do import-export, and from Afghanistan to here to serve the community as well, and that's become perhaps a mode of earning for all of you. But this is also under threat now. If all of these things are shut down, what is the future going to hold for people like you? I don't say anything about the future right now because the Taliban is very dangerous people. I don't think that they come again in India and we can do the export-import. You don't think you'll ever be able to do that again because Afghanistan, Taliban is now taken over? Right. It means like you don't think that they're going to be an old Afghanistan again, so we could talk and walk freely all around and travel anywhere we want to. And can you describe to me what old Afghanistan was like? Well, actually, since when I was a kid, and it was actually nearly 1997 or 1998 when the Taliban was in Afghanistan. The first time when the Taliban comes in. So it was completely horrific, you know, it was a chaos. I'm not in Afghanistan right now, but when I heard the name of Taliban, so definitely that image comes in my mind, definitely the same image. You still carry the trauma? The same thing image, you know, for quite a long time. Right. And as all of this is happening right now, who do you think, I don't know if I should use the word blamed right now, or who do you think didn't do enough? Who's let you down? Well, I think I don't exactly know about what you're asking about, but exactly we should blame our own government because our government had the support of like nearly more than 40 countries, NATO,
USA. And it Most took of 8 yeah, days. and it took completely, surprisingly, 8 days for even for me outside of Afghanistan. You know. And that is what is making a lot of people question what was the point of this war if this is going to be the end of it all. Do you have something to say? You've been so quiet this entire evening when I was talking to people. You've just been quietly standing in this one corner trying to sell your fruit. Survival is this, right? Yeah. Yeah, we have to earn money for our life in India. And right now, we are worried about it, that if the import-export we can do, to what should I do? I'm worried about it. If the import-export is gone, I mean, it is going to be done because I don't think there is going to be another freely trade between Afghanistan or India. I mean, so soon again. So, few of the lives, a handful of them here in this Afghan community which seem to be on track, well, that also stands derailed by the current developments of what's really happening in that city. I just want to end by giving 30 seconds to this man over here. Ali runs this bakery and this market over here. You've been talking to people all day long. I've been talking to people all day long. And one constant thing that I hear about them is, where is home now? madam, अभी क्या हमारा प्रॉब्लम क्या है कि आप पता है कि आज हमारा कल का कब्जा होगा काबुल से, हमारा फ्लाइट का बंद है, सारे रिश्तेदार का भी एयरपोर्ट है, मतलब ये बीच का प्रॉब्लम है हमारा, किसी लड़की के बाहर नहीं जाना, अभी सारे सामान महंगे होगा, एक रोटी का 10 रुपये होगा, आज 50 रुपये होगा काबुल से, हेरा से, कोई दुकान खुला नहीं है, सारे बिजनेस डाउन होगा, मतलब सब लोग का पता है ये पहले भी हो चुका है, फिर से वही रिपीट हो रहा है। हाँ जी, अभी पुराना का हमारा याद नहीं है, लेकिन अभी हालत का अभी 15-20 दिन होगा, इसी हालत का ख़राब है। हमारा रिश्तेदार है, अभी मैं सुबह से सिस्टर से बात किया, वो घर पे है, वो डर लगेगा, बाहर नहीं जाना है, ये प्रॉब्लम है। अभी सारे रिश्तेदार का अफगानिस्तान है, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हिंदुस्तान का, कितना हेल्प करना है हमारा, प्लीज़ हमारा जितना वो लोग का जान का खतरा है उसका वीज़ा देना है कि हिंदुस्तान का हवाला करना। Well, I think everything that needed to be said or heard has already been done. Well, that is the situation here in mini Afghanistan, here in mini Kabul, here in the Afghan colony, the national capital. So many lives, all now stand extremely uncertain. Thanks for watching.